Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. I'm doing great as well, alhamdulillah. Uh, it's the last Ashra in Ramzan. I hope that all the good virtues that you are doing, you get reward for it from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. All the prayers for everyone. Now, I am going to start this past perfect continuous tense today. Past perfect continuous tense के बारे में basically आज हम बात करेंगे. Past perfect continuous tense में we talk about events that had been happening in the past at some particular time. Past के किसी ख़ास टाइम पे कोई एक्शन होता जा रहा था या होता जा रहा था किसी ख़ास टाइम के ऊपर, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. ठीक है जी. तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव जिसका हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. कन्फर्मेशन से अफर्मेशन. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में मुस्बत जुमला भी कहते हैं, जिसमें किसी काम का होना ज़ाहिर होता है. वो किस तरह फॉर्म किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. लेट्स वॉच. सबसे पहले सब्जेक्ट एक्शन डूअर प्लस ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया जाता है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बिन लगाया जाता है, प्लस वर्ब प्लस ing which is present participle, mind you, and fourth form of verb at the same time, plus object if there is any, plus since or for, plus time. टाइम रेफरेंस से पहले since and for लगाते हैं, since और for लगाते हैं. So we'll talk about that later on. ठीक है. So मिसाल के तौर पे अगर हम पहला सेंटेंस बनाना चाहें, we had been traveling to US since 1988. और for अगर हमने लगाना है, उसके लिए कैसे करेंगे? We had been traveling to US for 10 years. We had been traveling to US for 10 years. For 10 years में अब हमें पता नहीं है कि वो 10 years कौन से थे, कब से स्टार्ट हुए, कब ख़त्म हुए. We do not know. ऐसी चीज़ के लिए हम for यूज़ करेंगे. लेकिन जहाँ पर हमें बिगिनिंग या स्टार्टिंग टाइम का मालूम है, since 1998, since 1988, since 1885, जहाँ पर हमें टाइम का मालूम है वहाँ पर हम since लगाएंगे. So this is how it works. Affirmative sentence, again, I would tell you guys how do we form affirmative sentence. Subject plus auxiliary had plus auxiliary been plus verb plus ing plus object plus sense of for difference, sense of for usage plus time reference. This is how we make affirmative sentence in past perfect continuous tense. Now let's talk about negative sentence. Negative sentence या मनफी जुमला कैसे क्रिएट किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. इसमें बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्शन डूअर प्लस ऑक्सिलरी हैड. ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया जाता है, प्लस नॉट. हैड के बाद, हैड की ऑक्सिलरी के बाद नॉट प्लेस कर देते हैं, फिर ऑक्सिलरी बिन आता है. सो इट मीन्स कि दोनों ऑक्सिलरी फॉर्म्स में नॉट प्लेस कर देते हैं, प्लस वर्ब प्लस ing which is present participle or fourth form of verb, plus object if there is any, plus since or for, plus time reference. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ऑक्सिलरी हैड और ऑक्सिलरी बिन को अफर्मेटिव सेंटेंस में भी
अलहदा से मेंशन किया. I mean, I could have written there auxiliary had been, but I didn't do that. Reason for this is that in negative sentence or in interrogative sentence और in negative interrogative sentence, इन दोनों auxiliaries को basically इनकी usage और होती है. जैसा auxiliary had comes at the beginning, ठीक है, beginning in interrogative, had I been, had we been. तो इस तरह से इनकी यूजेज अलहदा होती है, तो इस वजह से इनको सेपरेट रखा सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो दैट वाई और हाउ हैव वी broken auxiliary verb. There are two different auxiliaries or helping verbs. That's why हमने उनको place भी separately किया था, उनको separately place किया so that you do not get confused, आपको confusion ना हो. So negative तर्ज का जुमला दोबारा से हम देख लेते हैं. Auxiliary had plus not, auxiliary had के बाद subject plus auxiliary had plus not, auxiliary had के बाद not place कर देते हैं, plus auxiliary been plus verb plus ing plus object if there is any plus since or for plus time reference. मिसाल के तौर पे we had not been, we hadn't been, we had not been or we hadn't been traveling to US since 1985. We hadn't been traveling to US for 15 years. For 15 years. So this 15 years can be any. That's why हम वहाँ पर for लगा रहे हैं. लेकिन जहाँ पर हमें exact time पता है since 1988, वहाँ पर हम time के साथ basically exact time जहाँ पता है वहाँ पर हम since लगा रहे हैं. Right. Having said this, अब हम आएंगे जी interrogative तर्ज के जुमले के ऊपर. Interrogative तर्ज के जुमले के ऊपर सवालिया जुमले के ऊपर आते हैं कि सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. Auxiliary had comes at the beginning. सवालिया जुमला बनाने के लिए, इंटरोगेटिव जुमला बनाने के लिए auxiliary had जो है पहले लगा दिया जाता है सब्जेक्ट से. Auxiliary had plus subject plus auxiliary been plus verb plus ing, which is present participle or fourth form of verb, plus object if there is any, plus since or for, plus time reference, plus question mark. Mind you, question mark बहुत important होता है interrogative sentence में या उसकी formation में, या negative interrogative sentence में या उसकी formation में. अगर हम कभी question mark नहीं लगाएंगे उसके end में interrogative पे या negative interrogative के आखिर में, तो इसका मतलब है would be making a grammatical mistake. ये grammatical error होगा जो कि हमें avoid करना चाहिए. So now coming back to this, interrogative sentence किस तरह form होता है? Auxiliary had plus subject plus auxiliary been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time reference plus question mark. For example, had we been traveling to US? US जो है object है. Traveling where? To US. So this is an object. So had we been traveling to US since 1985? Question mark. Or had we been traveling to US for 15 years? Question mark. This is how we create interrogative sentence in past perfect continuous tense. Last but not least is negative interrogative. Negative interrogative जुमला कैसे बनाते हैं जिसमें नफ़ी भी आती है, negation भी आती है और साथ में question भी पूछा जाता है. क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछा जाता है. कैसे बनाते हैं? लेट्स सी. इसमें भी इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले की तरह ऑक्सिलरी हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. ऑक्सिलरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
plus auxiliary been plus verb plus ing, which is present participle or verb's fourth form, plus object if there is any, plus since or for, plus time reference, plus question mark. This is how we create negative interrogative sentence. So auxiliary had plus subject plus not. Subject के बाद हम not place कर देते हैं, उसके बाद auxiliary been लाते हैं. ठीक है, तो इसको दोबारा देख लीजिए. Auxiliary had plus subject plus not plus auxiliary been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time reference plus question mark. For instance, had we not been traveling to US since 1985 question mark, or had we not been traveling to US for 25 years question mark. This is how we create negative interrogative sentence in past perfect continuous tense. Now, having said this, guys, let's see these examples. I've had a couple of examples from each segment. For example, affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Couple of them to do with since and for. One in each with since, and one in each for with for. Excuse me. For instance, I'm going to read it out to you. I had been working on my project for 2 hours. I had been working on my project for 2 hours. It could be any 2 hours, इस वजह से for लगाया है. We had been working on our project since January 2021. अब टाइम एग्जैक्ट हमारे पास है, वहाँ पर हमने since लगा दिया, since January 2021. ठीक है. इसी तरह नेगेटिव तर्ज के जुमले, नेगेशन जहाँ पर आ रही है, वो कैसे बनाए जाते हैं. I had not been working on my project for 2 hours. I hadn't been working on my project for 2 hours. We hadn't been working on our project since January 2021. We had not been working on our project since 2021. So this is how we create sentences in negative formation. Now, if we say interrogative, सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं, जिसे हमने डिस्कस किया था. had comes at the beginning. So had I been working on my project for 2 hours question mark, or had we been working on our project since January 2021. अब आप देखें, had comes at the beginning. had की auxiliary beginning में आ जाती है और question mark end में चला जाता है. So this is how we create interrogative sentences in past perfect continuous tense. Last but not least again is negative interrogative sentence. इसमें उसी तरह से had पहले आ जाता है. Had I not been working on that project for 2 hours. Had comes at the beginning and subject के बाद आप not place करते हैं, फिर been आता है. बहुत से लोग इनमें गलतियाँ कर देते हैं. आई होप कि अब जब जिस तरह मैं आपको ये समझा रहा हूँ फॉर्मेशंस, आई होप आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे. कई लोग इस तरह कर देते हैं, had I been not working, had I been not working. This is absolutely wrong. So had I not been, सब्जेक्ट के बाद आप not लगाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में, and then you place been. So had I not been working on that project for 2 hours question mark, had we not been working on our project since January 2021 question mark. This is how we create negative interrogative sentences in past perfect continuous tense. I hope, guys, that it is going to help you guys. We are going to send you a couple of worksheets to do with this, which you're going to practice
and submit in the groups. And you're going to get the PDF as well, along with the video lecture of this very tense that we're doing here right now. So that's about it for tonight. I will see you guys again, inshallah, in coming week. Look after yourselves, and I'll see you guys next week. Thank you. Khuda Hafiz. Fi aman Allah.